Hello everyone, I am Chef Nishant Chaubey. I have been chef for the last 22 years. Today is time for festivity and it's Christmas time, it's Thanksgiving time, and of course we have a brilliant happy new year coming very soon. So for this beautiful occasion, I'm gonna bake a cake. Without any delay, let me call my beautiful kids and my lovely wife. Hi, how are you guys? How are you guys doing? Hello, how are you? Okay, so let me... I want almonds. You want almonds? I want cranberry. Okay. Cashew nuts as well. Why do we cut fruits and why do we eat together? Because we want blessings, you know. We want that internal blessing from everyone so that our coming year becomes nice and merry. So this is about Merry Christmas, okay? Merry Christmas! Merry Christmas! And time to do some bit of alcohol, add some alcohol. So a quick check on the recipe. I have taken 100 gram of cashew nut, 50 gram of almonds, 30 gram of raisins, 50 gram of cranberries, okay? And for that I have taken 500 ml of alcohol, which is rum and whiskey. You can also take other alcohol like cognac, brandy. And of course this spice is a content of ginger powder, 80 gram refined flour, 80 gram castor sugar, 20 gram cocoa powder, 2 eggs, baking powder 2 grams, 100 gram yellow butter. Now time to wrap the fruits and keep it aside. 1 महीने पहले कम से कम फ्रूट्स को जरूर सोक कर लें. आपका केक बहुत ही, आपका पुडिंग या केक बहुत स्वादिष्ट बनता है. सबसे पहले आपको ये जो येलो बटर है इसको इस बोल में डालता हूँ. एंड देन आई एम गोना पुट कैस्टर शुगर. रेसिपी जब आप बनाते हो केक का, एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर यह है, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक प्रोपोर्शन में होने चाहिए और सारे वेट इंग्रेडिएंट्स एक प्रोपोर्शन में होने चाहिए. एग 1, 2 and then back to the blending time. So I'm just trying to make it as fluffy as possible. Time to add the dry ingredients. So मैं सबसे पहले इसमें क्या करूँगा, मैदा और कोको पाउडर इन दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं. और इसके अलावा इसमें जो 2 ग्राम बेकिंग पाउडर है उसको भी मिक्स कर लेते हैं. इन तीनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है. एंड देन मिक्स इट इन दिस मिक्सचर वेरी जेंटली. नाउ टाइम टू ऐड दैट fruit that we soaked in alcohol. Let me just open this. Yeah, added the fruits. Let me mix it. And then very important, when you take any mold to bake a cake, don't forget to season it. Seasoning का मतलब यह है कि आपने ये पैन लिया, मेरे पास ये केक टिन है, मैं सबसे पहले इसको अच्छी तरह से ड्राई करूंगा. देयर शुड नॉट बी एनी मॉइस्चर इनसाइड द केक टिन. एंड देन यू हैव टू पुट बटर लाइक दिस. जस्ट डू इट evenly. And then you put your batter inside. Just do like. Now I would add little bit more fruit on top. Time to bake the pudding at 180 degree for around 25 to 30 minutes. Tring tring! हो गया हमारा प्लम पुडिंग तैयार. तो चलिए देखते हैं कि क्या स्थिति है. आई एम श्योर इट इज़ रेडी. ये देखिए. वाह, बेक सो वेल. मैंने आपको एक बात और भी बोला था, ये केक को कैसे चेक करना है कि आपका केक पका है कि नहीं. तो ये देखिए एक तरीका. आप अपने नाइफ को क्लीन करें और एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंसर्ट इट इन फ्रॉम ऑल दिस साइड. एंड अगर ये क्लीन निकल रहा है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्लीन है. तो अगर आपने ये पूरा ये क्लीन आ रहा है, इसका मतलब आपका केक अच्छी तरह से पक चुका है. ओके, लेट दिस सेटल डाउन फॉर अ बिट. Okay,
Then wait for another 15 minutes. How moist and gooey this cake is. My God, this is so superb, I can't even tell you. I'm gonna make the sauce with some bit of cream, some bit of egg yolks and some bit of brandy in that. वो आप सॉस बनाएं, इसके ऊपर डालें and then you are ready to go. So this is how my plum pudding looks like. How is yours? Please do let us know by writing in our comment section. Don't forget to subscribe, like and share with your friends and be happy. Merry Christmas!